Yes, a very good afternoon, students. Today we are starting the third chapter of NCERT mathematics. That is, the chapter is matrices. Matrices is what? It is the plural of the word matrix. And the purpose of developing this topic is to find the simple approach to solve a linear system of equations. Means when you have done equations like 2x plus 3y equal to 0 or 5x plus 6y is equals to 3, such type of equations that you have done, there is a simple approach to solve this linear system of equation, and that is matrices. Now linear equation, they are not required to be of two variables only. We can have three or more variables also, right? Okay, so now these days this matrices is being used in computer science, in business, in spreadsheets, and etc. Right? Okay, now what is a matrix? Yes, matrix as means regarding its representation. क्या है क्या ये? Matrix is a rectangular array. Array means arrangement. Rectangular array of numbers, and these numbers, they are real or complex. They are numbers or functions. Means this is the representation of a matrix. ठीक है? In a rectangular array, rectangular arrangement. ठीक है? These numbers, these are called rows. ठीक है? These are called rows. Here I am writing here, this is R1 and this is R2, and these are the columns, that is C1, C2, C3. ठीक है? This is my column 1, column 2, and this one is my column 3. Right? So these numbers that I have written here, 1, 2, 3, which are forming this matrix, these are called elements or entries, but generally we use the name as elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, these all are elements, and 1, 2, 3 is row 1, and 4, 5, 6 is row 2, 1, 4 makes column 1, 2, 5 makes column 2, and 3, 6 makes column 3. So we can say C3, we can say that, right? So we can say that rows are what? They are the horizontal placement of the elements, and column is the vertical placements of the elements, right? So this is regarding the matrix and its representation. Now next is order of matrix. What is the order of matrix? Beta, order of matrix means number of rows multiplied by the number of columns is called the order of matrix. If the number of rows are m and the number of columns are n, then the order of the matrix is m multiplied by n. Okay. For example, if I say in the above example, how many rows are there? 1, 2. 2 rows are there, and how many columns are there? 1, 2, 3. Generally, when I said that rows we are representing by m and columns by n, so here in the present situation I am having the value of m is 2 and the value of n is 3. So the order of this matrix is 2 into 3. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 2 into 3 or 2 by 3, right? So A1, A2, A3, A4, A5, A6, if I take it in the general form, then it is a matrix of order 2 by 3. ठीक है? Okay, we can write them in another way also, like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here 3 rows and 2 columns, right? Now representation of elements of a matrix. बेटा अभी तो हमने एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अगर हमें जनरली इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो चेक करना हो तो हम उसे कैसे चेक करेंगे? जस्ट सी हियर, इफ आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स ए, ठीक है? ध्यान रखना बेटा, आपने जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते थे ना इन आवर अर्लियर क्लासेस, उसी को ही आपने थोड़ा सा लार्ज साइज में लिखते हो, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ इफ आई से दैट दिस A11, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. A12 is the element of first row, second column. A13 represents the element of first row, third column. Similarly, A21 is second row, first column. A22 is second row, second column. A23 is second row, third column. A31 is third row. It's an element of third row and first column. And A32 is third row, second column, and A33 is the third row and the third column. Clear? Okay, thus if we are asked what is A21, means we have to find the element in the second row, first column.
राइट. ओके, नाउ जनरली जब हमें इसको मेंशन करना हो, हम एक मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अभी तो हमने फिक्स किया था एक 3 by 3 मैट्रिक्स का. व्हेन वी आर नॉट गिवन एनी ऑर्डर, देन हाउ वी रिप्रेजेंट. Listen, I said ki there are m rows and n columns. It means if I write m a11, a12, a13, it will go up to a1n. Similarly, a21, a22 up to a2n, a31, a32 up to a3n, so on. ठीक है. एंड ए एम वन मीन्स मेरे पास कितनी रोज हैं, एम रोज बोली थी, तो लास्ट रो क्या होगी, mth रो. तो ए एम वन, ए एम टू अप टिल ए एम एन. ठीक है. m is representing the row and n is representing the column, right? And if suppose I am given any ith row which is lying in between the a1 to a21 or but it is less than a1 am1, then if it is the ith row, to ai1, ai2, ai3, and if there is any jth column, then it will be aij, ain up to ain. ठीक है, क्योंकि मैंने बोला jth रो, सॉरी jth कॉलम, ith रो. तो ए आई जे इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. अगर किसी को कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी मच क्लियर टू यू. इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो. यू विल एंजॉय डूइंग दिस टॉपिक. मीन्स दिस इज वन ऑफ द टॉपिक दैट स्टूडेंट्स enjoy in doing the questions, right? So this is a matrix of order m by n. ठीक है. where I is what. ठीक है. जब मैंने भी I बोला था, मैंने बोला था ith रो. तो रो is lying between 1 to m and jth column बोला था, मीन्स जो j है आपका, it will lie between 1 to n, including 1 and n in a jth column and including 1 and m in the ith row. So general representation of a matrix is aij m cross n or m by n. m by n is the order, ith row, jth column. ठीक है. In NCERT we can write any entries, but in NCERT what they want is only real numbers. ठीक है, should be there for entries, and or there can be real valued function. No other entries like complex numbers are included in NCERT class 12th. Okay, now next is how can we, for example, when we are given a quadrilateral with having coordinates as 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. Now we can use this in the form of a matrix. कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8. We can make a matrix. ठीक है. Or we can write it in this form also. This is the horizontal form and this is the vertical form. 1 2, these are the coordinates of A, coordinates of B, coordinates of C and coordinates of D. ठीक है. दिस इज वी आर डूइंग द रिप्रेजेंटेशन. अब इसको हमने यूज कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, दैट वी विल स्टडी लेटर. ठीक है. सो नाउ फॉर एनी मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. ठीक है. मीन्स m इंटू एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. अब कैसे, देखो, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को भी उठाऊं, कितने हैं इसमें रोज, 2 rows आर देयर. हाउ मेनी कॉलम्स, 4 columns आर देयर. ठीक है. सो 2 into 4 is 8. तो इट मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए इसमें, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर हो गया ये. ठीक है. दिस वे वी कैन फाइंड, इफ मीन्स वी आर गिवन द ऑर्डर, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स it is having, and if we are having the number of elements, we can find how many rows or column, what might be the order of the matrix. ठीक है. So suppose you are given a matrix has 8 elements. Suppose you are given that if a matrix has 8 elements, then what are the possible orders we can have? Yes beta, because आपने 2 into 4 लिया था, हमने कह दिया that is 8, but there are some other ways also in which we can get 8. Like if we are given 8 elements are there in a matrix, then what possible orders we can have? It could be 1 into 8 or 8 into 1, 2 into 4 and 4 into 8, and there is no any other way we can find this 8. ठीक है. So the possible orders of getting a matrix of 8 elements is 1 by 8 into 8 or 8 by 1 or 2 by 4 or 4 by 2. ठीक है. Now suppose you are to construct a 3 by 4 matrix whose aij is equals to half of
मॉड्यूलस -3i+j। बट आप ध्यान से देखेंगे बिकॉज इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस लाइक दिस। ठीक है, मुझसे कहा कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें aij इज हाफ ऑफ मॉडुलस -3i+j। ठीक है, अब मुझे जो 3/4 मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, जिसमें 3 रोज होंगे, 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, मैं उसे लिख सकती हूँ A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 एंड A31 A32 A33 एंड A34। ओके, नाउ इफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गिवन टू मी, मैं अपनी मैट्रिक्स कैसे डेवलप करूँगी। मुझे दिया है IJ। ठीक है, व्हेन आई से A11 इट मीन्स दिस इज व्हेन I is 1 and J is 1। So if I put I as 1 and J as 1 in this situation, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, it will be A11 is हाफ मॉड्यूलस -3i, 3i+j बोला था ना, -3i, तो -3i की जगह पे 1 लिखा, j की जगह पे हमने 1 लिखा, तो -3 + 1 कितना हो गया, -2 इन द मॉड्यूलस। और आपको मालूम है कि मॉड्यूलस से बाहर आएगा तो साइन विल बी इग्नोर्ड, सो इट विल बी हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1। सो इट मीन्स दैट A11 is 1, means the element in the first row, first column is 1। Now A21 अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, मीन्स आई विल पुट I as 2 and J as 1। ठीक है, सो हाफ ऑफ -3 into 2 plus 1 which is equals to what, -3 into 2 is 6, -6 plus 1 is what, -5। so half into -5 मॉडुलस से बाहर आया तो क्या बन गया 5, इट इज़ 5/2, सो इट विल बी 5/2। ठीक है, अब जो समझाया आपको IJ की वैल्यूज पुट करने के तरीके से, ये सारे जो ब्लैंक्स मैं आपको दे रही हूँ, ये सारे ब्लैंक्स आप मुझे खुद फिल करके देंगे एंड डू इट राइट नाउ। ओके, थैंक यू।